और ये कॉन्फ्रेंस इनफैक्ट on a live Japche Taizuno, I will be speaking more on Hindi and English that it goes all across. There are a lot of media live and getting covered all across. Pratham Namaskar. It's wonderful to be here again in Calcutta, especially Calcutta for Journalists Club after many years. And I think last time when I came in Calcutta for Journalists Club was to receive accreditation by Calcutta Journalists Club. So that's been many years coming here. And to see all of you coming here is very nice. So today's press conference हम भाग में करने जा रहा हूँ. I will be speaking of Indian football जो अभी का situation है. I will speak little bit on, not little bit, थोड़ा ज़्यादा ही on AIFF management का अभी and not big quite a bit of because मैंने कभी press conference करके हमारा BBFS भाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल्स एंड एकेडमीज का बात नहीं किया हूँ तो थोड़ा हमको लगता है कि अभी समय है सारा बंगाल सारा इंडिया को एक जानकारी हम लोग क्या कर रहे हैं देने के लिए सो ये फेज वाइज में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे रिकॉर्ड करेगा चाहिए इफ यू लुक एट टीम्स व्हिच आर डूइंग now they have one striker number 9. For number 9 who is not for mostly scoring goals. You can look at the data of the highest Cristiano not an out striker, he's an attacking midfield, attacking striker. Look at Lionel Messi, who is also not out and out striker. So why are we comparing striker and striker? Today we don't expect strikers to score goals. We are playing with just one number 9. A lot of clubs in the world does not even play with strikers. They play with 4-3-3. Those are all attacking midfielders and they can score goals. So we are only comparing. We are comparing India to striker. Look at Sunil Chhetri. That is the best. He's the best. Also, where we not look at Argentina, name against striker after we don't know who's going to score that. So we can't produce striker because Sunil has proved that he's been and you control France in a live situation. And if you look at the next striker who scores as many goals as Cristiano, find it. So Sunil is still playing. So hopefully find somebody to come in, but still playing for the club and the country, and we still produce. So we can't say that we've not produced strikers. We produce one striker that has been the first goal scorer in the world. So we can't say in India हम लोग के पास स्ट्राइकर नहीं है and all countries only produces one in the lifetime of generation और आपने पूछा भारत में फुटबॉल में खराब स्थिति चले जाए लेकिन एक भारत स्थिति আছে So when you are saying that if ISL does not happen this year, that Indian football is going to be a disaster. In the current scenario, in the last 1.5 years, is it really a good scenario? It's not. So I think we need to be patient because it's a Supreme Court decision. So obviously nobody can, challenge that. So now let's hear for the decision. If the new party has to come in and negotiate, as I said, it should be a win-win situation for Indian football, and that will happen. But yes, it's unfortunate that it does not happen. And teams have to go and negotiate. I think would have been nothing in the so I think if we move professional career and with FSDL together, doing for FSDL plus Indian, I think it should be a win-win situation. So if it happens, it might be a problem. Now, I think it's going to be if it's deal right and everybody is in a good situation on it, it's going to be a good situation for and get it done. But I think it's disaster for it. So, the Indian football का planning strategy, roadmap और क्या situation है. In fact, everybody is aware
कि इंडियन फुटबॉल का अभी स्पेशली लास्ट कपल ऑफ इयर्स में the way we've been sliding downhill in terms of ranking and in terms of performance is very very unfortunate. मैं सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन इसके आगे इनफैक्ट ये सिचुएशन इंडियन फुटबॉल लेके जिस स्थिति में था, लॉट ऑफ यू स्पेशली फ्रॉम कैलकाटा जर्नलिस्ट हैव बीन कॉलिंग और रिएक्शंस आप लोग हर समय मांग रहा है कि क्या रिएक्शन, और इतना फोन आ रहा है तो आई सेड क्यों ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करें। और जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस किया था तो आप लोग एसएमएस के द्वारा थ्रू कॉलिंग स्ट्रेट कॉलिंग रिक्वेस्टिंग कि आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस 101 इंटरव्यू के लिए, तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्लीज, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बहुत आप लोग देख रहे हैं कि कितने जर्नलिस्ट है, सो टू डू 101 विद एवरीबॉडी आप लोग के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। So please cover this whatever it is. इसके बाद I would make sure because इधर आप लोग बहुत ज्यादा questions है मुझे मालूम है, so I want to give more time on Q&A। आप लोग जो इंडियन फुटबॉल या जो भी issues फुटबॉल लेके आप लोग को सही समय I want to give it, ताकि आप लोग का स्टेट में उन लोग को फीस देना पड़ रहा है which is quite in big number, thousands में है, 1 star 2 star का दे रहा है, even despite paying so much money and also starting an academy, they have not been able to play youth leagues. So I think which is a big setback for Indian football. First thing is, I think the most important part for everybody around, anybody involved with football, is to make sure let's bring in more kids to play. And this is the system where AIFF is really blocking. There are academies like BVFS, there are academies like Minerva, Sudeva, a lot of them private academies now. अभी चेन्नई में आया है which is run by I think very successful Madras. I think they are the main backbone of bringing talent and giving it to India, because lot of the states आज स्पेशली अब नॉर्थ ईस्ट का ही देखा, सबसे बच्चा एकेडमीज में नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, लॉट ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्लब्स एंड एकेडमीज के पास सस्टेन करने के लिए फंड्स के लिए बच्चों को रखने के लिए पैसा नहीं है, सो लॉट ऑफ द टैलेंटेड किड्स वहां से निकल के अपॉर्चुनिटीज और प्लेटफॉर्म्स के लिए दे आर कमिंग टू क्लब्स इन दिल्ली, मिनर्वा में आ रहा है कोई, मद्रास, कोई बीबीएफएस में, सो दैट दे गेट गुड ट्रेनिंग एंड दे गेट दैट प्लेटफॉर्म एंड देन रिजल्ट्स आर देयर टू सी, बिकॉज आज का टाइम में इंडिया का जितने भी एज ग्रुप टूर्नामेंट्स है एंड सीनियर्स में है, all the kids, 90% of kids are come from all these private academies. Yes, we need to do much more than what we are doing, but that also requires a lot of support from corporate to state government to central government. So these are things which are lacking big time. Is also on the age fraud. I think that's been one of the major problem for Indian football, and that is something where federation can come in. Though obviously Indian football ko going forward, there are a lot of points. It's just not only grassroots. Apart from grassroots, there are steps. But I don't think I'll be able to cover up everything in today's press con, because that will take months to really speak and tell you. But few points which is very very important for any development is grassroots, and these are the few factors. In fact, एक example था, गर्ल्स टीम का अंडर सब जूनियर गर्ल्स हुआ था, हरियाणा का लड़की लोग का टीम हुआ, एंड देयर वर लॉट ऑफ गर्ल्स, वो लोग ने हरियाणा टीम में चांस नहीं मिला, एंड दिस गर्ल्स being so good because Haryana had a lot of girls from every state and within Haryana as well, academies के चलते they went, because 20 के बाद next 20 did not get the chance, so other 20 went on to play for I think Daman and Diu कहाँ से स्टेट से जाके खेला juniors India girls का, and they went on to play the finals with the Haryana, वो लोग का स्टेट का लड़की लोग के साथ, and they went on to win the sub juniors India. See, I think these are the things which we should allow, because state associations will say नहीं, हम लोग को ये opportunity देना है, that's up to state to decide. अगर आपके पास अंडर 16 गर्ल्स या बॉयज का प्लेयर्स नहीं, आप नहीं कर पा रहा है, कोई टैलेंटेड प्लेयर अंडर 16 का आके खेलना चाह रहा है, प्लीज अलाउ देम, बिकॉज एट द एंड इट्स द बेनिफिट फॉर इंडियन फुटबॉल. So those girls went on to win the sub juniors, and some of the girls are now playing for India. अगर उस रूल करता कि हमारा दूसरा स्टेट का लड़की लोग नहीं अलाउ है, लुक एट दिस गर्ल्स हु हैव नेवर प्लेड फॉर इंडिया, वो टैलेंट कभी देखने को नहीं मिलता है.
And this is what exactly right now under Kalyan Chaubey is trying to stop this happening. Santosh Trophy, ठीक है, it's okay. Santosh Trophy, you should allow players registered in the state league and from the state to play, but not with the grassroots. Let them play. Let the kids come out and play. Let them, have a dream to go on to play for state and India. Don't try and stop kids from participating. Restriction डाल के आप ये state से नहीं है तो आपको खेलने नहीं देगा. I think we need to look at bigger picture for Indian football, and that's where we'll have to look into it. अभी हम लोग रैंकिंग वाइज भी लेटेस्ट रैंकिंग में 133 किया है एंड अभी सभी देख पा रहा है कि एशिया कप क्वालिफायर्स में भी वी आर रियली स्ट्रगलिंग टू क्वालिफाई एंड आई स्टिल बिलीव वी जस्ट प्लेड 2 मैच एंड आई स्टिल बिलीव आई थिंक विद द टाइम नाउ इन अक्टूबर नेक्स्ट मैच अगेंस्ट सिंगापुर we still have a good chance to qualify, and I have a trust and belief with the Indian players. I'm sure they can qualify. At the same time, we also should realize that Asia Cup team after 2015 has become 24 team. अभी 24 टीम एशिया कप के लिए खेलता है. When we qualified for the Asia Cup under my captainship, तो 2011 का समय में हम जब खेला और 2008-9 में क्वालिफिकेशन हुआ, those days only 16 teams को खेलने को मिलता था. So after 2015 it has become 24 teams. So I feel 24 के अंदर तो आना चाहिए. So I have full faith and trust. Let's hope that we will start performing against Singapore. But sadly, it has not happened the way we want. There are a lot of reasons apart from just on the field, off the field का भी. In fact, हमारा ग्रेट प्रेसिडेंट कल्याण चौबे ने तो बोला था कि 2026 में हम लोग टॉप 10 में आने वाला है. टॉप 10 का वो रखा था, एंड ही हैड आल्सो कम आउट विद 2047 प्रोजेक्ट इंडिया विजन 2047, एंड विद इन दैट 2026 में ही सेड हम टॉप 10 एशिया में आएंगे. एंड अभी कल 2-3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगे बोल रहे हैं ये तो आप 10 साल आगे से प्रिपेयर करना था. इनफैक्ट जो प्लानिंग था एशिया कप एशिया में टॉप 10 में आना, ये काफी साल आगे से अंडर प्रफुल्ल पटेल जी देयर वाज अ कंप्लीट प्लान, एंड दैट बाय 2025 वी वर सपोज्ड टू बी इन, 2025-26 we were supposed to be in, but last 3 years I think in terms of performance, in terms of management, I think we've really had a very bad disaster. It's not only with men's team. In 3 years time under Kalyan Chaubey, I think even women's team has gone down in the ranking quite badly. So that's been very unfortunate. So how do we change this now? It is very important. We as a nation, we need to start getting results. India team को how do you get results in international football? Who gets those results? आपको results एक ही लोग दे सकता है, those are players. प्लेयर्स आपको रिजल्ट दे सकता है, तो हमको प्रोड्यूस करना पड़ेगा ग्रेट फुटबॉल प्लेयर्स, गुड क्वालिटी फुटबॉल प्लेयर्स. जब तक हम प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सो वी कांट एक्सपेक्ट देम टू डिलीवर एंड क्वालिफाई फॉर एशिया कप एंड द वर्ल्ड कप. हाउ डू यू प्रोड्यूस प्लेयर्स? यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग ग्रासरूट फुटबॉल. अभी हम लोग विजन 2047 कल्याण चौबे का खाली पेपर में ग्रासरूट विजन 24, खुद को भी आई डोंट थिंक ही इज आल्सो रेड विजन 2047 क्या है एंड ग्रासरूट क्या है. नाउ टू इंप्रूव द ग्रासरूट प्लेयर्स आज समय में कहां से आ रहा है, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम? दिस प्लेयर फॉर नेशनल टीम ऑल कम्स फ्रॉम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट से आता है, स्टेट से आता है. सो व्हेन यू डोंट players producing your grassroots strong in state level, where are you going to produce players? And today when you look at the federation ka, I was not seeing the packets and state associations ko de raha hai fund. When I fought the elections, I said very clearly that state association should get minimum 50 lakh or even more. 3 years का टाइम में the federation has been able to give 24 lakhs to state associations, and I was reading the breakup, and आप लोग सबको मालूम है वो breakup में 12 lakh is going for the office
staff salary, finding the office space, and administrative work के लिए. Another 10 lakh is going for the tournament, 4 big tournament, which is senior national men's, women's और junior. 10 लाख वो खाली 4 टूर्नामेंट के लिए दिया है. बाकी रह गया आपका 2 लाख. 2 लाख में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रास रूट डेवलपमेंट. Now look at the kind of money आप स्टेट को ग्रास रूट करने दे रहा है. It's very important that state associations को we need to support financially. Same time, make a panel of experts to help them conduct tournaments, help them conduct grassroots football programs और grassroots football. 2 लाख रुपए फर्स्ट में आप कितना ग्रासरूट कर सकते हैं, उसमें किटिंग भी खरीदना पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, और ग्रासरूट कैसे कर सकता है. एंड ग्रासरूट भी जब भी कर रहा है, आई थिंक बिकॉज ऑफ स्टेट एसोसिएशंस को भी काफी डिफिकल्टी है, बिकॉज फंड्स नहीं, हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट से बहुत लिमिटेड फंड्स है, स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा है स्टेट एसोसिएशन को. तो हाउ कैन फेडरेशन एक्सपेक्ट 2 लाख में ग्रासरूट प्रोग्राम करें. एंड लॉट ऑफ टाइम ग्रासरूट प्रोग्राम हम लोग का जो लिख रहे हैं, lot of states are doing it, but we are also doing it only for tick mark करने के लिए, box को tick करने के लिए. Now, if you really want to develop and make India a strong footballing nation, जितने भी grassroots programs है, they need to be playing at least competitive matches once a week, जो यूरोप, साउथ अमेरिका में फॉलो करता है, and that is not possible with 2 lakh. So state associations have a huge problem because funds का नहीं है. So where do you come in? First thing is, I think the funds has to increase so much to state association and make sure that the funds are going straight for grassroots development. And you have an expert panel, which is expertise bringing from foreign experts, academics, who can get a great idea to make sure that every kid is training, but at the same time, once a week, within that own state, within the own district, we are creating a league so that every kid is playing a match throughout the tournament. हम लोग का ग्रासरूट अभी क्या हो रहा है, 10 दिन में ग्रासरूट खत्म हो रहा है. ग्रासरूट एआईएफएफ का